boy, assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to the YouTube channel. Fuck. आई होप आप सबका बहुत अच्छा दिन गुजर रहा होगा. मेरा अच्छा दिन गुजर रहा है अभी तक, लेकिन इट्स ओनली अप टिल नाउ क्योंकि आज हैं लेग्स एंड मे गॉड हैव मर्सी ऑन मी. बाकी यार लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू द जिम राइट नाउ. यार आई एम हैविंग अ वेरी मॉडिफाइड स्प्लिट. इट्स लाइक अ पुश पुल लेग्स एंड देन रेस्ट एंड देन अपर बॉडी एंड देन लोअर बॉडी, या फिर लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी. एंड ये जो अपर बॉडी वाला सेशन होता है ये मोस्टली लाइक इट्स अ रिजर्व सेशन. इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली अपर बॉडी. मतलब कभी मैं आर्म्स कर लेता हूँ इसमें, कभी आई डू चेस्ट एंड शोल्डर्स, कभी आई डू एक्चुअली अपर बॉडी. इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल स्प्लिट. तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा पुश पुल लेग्स हो जाता है. तो आई एम लाइक चिल के लाइक यू नो सब एक एक बार हो गया. नाउ थर्सडे रेस्ट ऑब्वियसली इट्स लाइक एक्टिव कार्डियो. और जो फिर अपर बॉडी सेशन बचता है उसमें आई ट्राई कि जो है ना जो मेरी वीकनेसेस उस पर काम कर लूँ. चेस्ट वगैरह हो गया. और करंटली आज लेग डे है. विल बी ट्रेनिंग लेग्स टुडे. मजे की बात ये है कि यार माय लेग्स हैव आउटग्रोन इन द पास्ट ईयर. तो मसला ये है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश मच वॉल्यूम ऑन लेग्स. आई ट्रेन देम इंटेंसली, लेकिन मैं वॉल्यूम ज्यादा पुश नहीं करता. तो मैं लेग डेज को मैं 60% लेग डे कर देता हूँ एंड 40% इट्स समथिंग लाइक यू नो वर्किंग ऑन माय वीकनेसेस. फोर आर्म्स हो गए, रेयर डेल्ट्स हो गए. दे आर नॉट एक्चुअल वीकनेसेस बट लाइक आई नीड टू फोकस ऑन देम मोर. यू नो आई नीड टू हैव बिग फोरआर्म्स. ये मेरा गोल है फॉर नाउ. तो आज का जो वर्कआउट स्प्लिट है वो कुछ समथिंग इस तरह होगा. विल डू लेग एक्सटेंशंस टिल फेलियर. विल डू बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इग्नोर स्क्वाट्स राइट नाउ. मेरे थोड़े से लोअर बैक का मसला है. आई फाउंड कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स आर वेरी गुड सोल्यूशन एंड आई यूज्ड टू हेट देम इन द पास्ट क्योंकि मेरी फॉर्म सही नहीं थी. मुझे सही से स्टेबलाइज नहीं करना आता था. बट वंस आई हैव लर्नड देम दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू स्क्वाटिंग एंड लंजेस. इसके अलावा विल डू लेग प्रेसेस. आई थिंक आरडीएल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगेन लोअर बैक वाला मसला है. विल डू लेग कर्ल फॉर हैमस्ट्रिंग्स. स्मिथ मशीन काफ रेजेस till failure properly. उसके बाद we'll do some form of rear delt, maybe face pulls and rear delt raises for forearms. देखते हैं क्या होता है. Bro, ever since I've started uploading on TikTok, funniest shit happens out of somewhere. TikTok is wild, bro. Violations on violations. बड़े मजे की चीज होती है. अच्छा, पहली बात यार, obviously सबको पता होगा, I have the worst chest genetics ever. So I used to have like you know chest fat and all that shit. और मेरा chest अभी grow नहीं होता है in terms of muscle mass as well. जबकि मैं हफ्ते में 2-2, 3-3 बार ट्रेन करता हूँ, करता आया भी हूँ. यार, I uploaded this video. How to get an aesthetic chest, alright? बंदे का कमेंट आता है वीडियो पे, अपना तो बना ले. कैसे करते हैं यार ये लोग. वायलेशन भाई, सुपर वायलेशन. फ्रेंडली फायर. So tip number 1 is that don't chase the pump. So you need to understand कि जब आप जाके वर्कआउट करते हैं and weights lift करते हैं तो आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स क्रिएट होते हैं and आपके मसल डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड भेजती है which burns out the muscle ताकि आप अपने आप को कोई इंजरी ना पहुंचा सकें and it sends other liquid and fluids to the muscle to make sure कि मसल अपनी रिकवरी प्रोसेस में चला जाए और ज्यादा डैमेज ना हो. ये सारा लैक्टिक एसिड एंड फ्लूइड एंड ग्लाइकोजन जब आपके मसल में आ जाए it makes your muscle look bigger and fuller while you are working out. This by no chance means कि आपका muscle develop हो. This is just your body's response to heavy weight training. And you would see some guys go there and just pump their muscles and think कि हमारा काम हो गया है. Now our muscles would get bigger. If you want bigger muscles and muscular development, आपको एक proper routine follow करना होगा. Training to failure and competing your intensity, volume and frequency. बाकी यार मैं निकलने लगा हूँ. Let's just head to the gym. I'm wearing this pump cover by Iron Gear. The hybrid jacket है. यार the best part about this jacket is it's so lightweight ना. You can wear this around the season, around the year, किसी भी टाइम पे. If you're getting this or anything, use code DS10 for discount obviously. Let's just hit some legs and see you guys at the gym. So boys, let's start from the basics. Ever since I suffered an ACL injury back in 2018, मैं अपने warm-ups और stretching को बहुत religiously follow करता हूँ. Doing right now are my favorite lower body stretches. मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ. I'll link that video down in the description. So the first exercise will be leg extensions. Now I'm a big believer and follower of the pre-exhaustion method. I believe कि पहले एक isolation movement करके you get the proper blood flow into the muscle and you pre-exhaust the muscle so that later it helps you achieve failure with less weights on the compound exercises. So the next exercise are Bulgarian split squats. I know you all hate this. I used to hate them back in the past. जब से मेरा lower back का मसला हुआ squatting की वजह से I cannot do squat like heavy squats anymore. This is almost like a squat because you can go deep in these and you can see जैसे सामने वाली टांग है it's almost imitating a squatting movement but it's more stable and more safer since you have a support at the rear. So तुम्हारी lower back is not pivoting the center of gravity. It's not on your spine. So it's safer, it's better. And there we go, mid workout pump check. Alright, so the next exercise is leg press. I've seen a lot of people who
put a lot of weight on the leg press and they're just going through half of the range of motion. यार मसला ये है पहले ही leg press का range of motion बहुत कम होता है. If you can see that, you would know. range of motion restricted होता है, उसमें भी तुम लोग आधा इंच का range of motion करना शुरू कर देते हो, which actually destroys the whole point of the exercise. Put on a weight which is light or medium and go through the entire range of motion. Absolutely go to the bottom जहाँ पे तुम्हारे घुटने at least comes close to your shoulders and then push from there. Alright, so we're done with quads here and the next exercise will be Smith machine calf raises. Now for the past 4 or 5 years I have been doing only one exercise for calf. If you execute this properly, it is one of the best exercises for calf. You can overload these because your calves are used to a lot of volume, so pushing intensity on them would actually make them grow. Alright, the workout is done. यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है इसलिए So tip number 2, train legs more often. You need to understand कि आपकी जितनी compound है, जितनी leg based movements होती हैं, they actually boost and increase your testosterone and other growth hormones. Although ये बहुत ही minor से increment होता है, but you need to take advantage of those small numbers even. So you all know that testosterone is your male hormone. It's the basic hormone जिस पे सारी muscle growth and recovery rely करती है. Even a little increase in your testosterone and other growth hormones means you're gonna build more muscle overall. Also back in the days जब मैं train करता था, I used to skip legs more often. Thinking कि मुझे जरूरत नहीं है. But when I realized this, I started training legs often twice a week and my results went crazy high. So train legs more often and please don't skip legs. और भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र वर्कआउट इज ओवर. अब मुझे 7 दिन तक लेग्स नहीं करनी है. यार ऑल्सो मतलब लाइक लेग्स करने के इतने मसले, मतलब एक तो सबसे मुश्किल तरीन चीज़ दुनिया में. When you do legs, I am sure सबके साथ होता होगा, तुम लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन मेरे साथ ये अलग ही लेवल पे होता है. अपर बॉडी डीप पंप हो जाता है, ऐसा लगता है मतलब ऊपर से डिफ्लेट हो रहे हो. टेल मी लाइक वन थिंग टू हेट लेग डेज मैन, अपर बॉडी छोटी हो रही है लिटरली लाइक. बाकी आई एम श्योर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए. वेदर यू वांट टू सी इट और नॉट, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा. ऑल्सो आई एम अ बिग बिलीवर इन द एनाबॉलिक विंडो एंड इट डज एग्जिस्ट ब्रो. आई एम लिटरली द टाइप ऑफ गाय हु इज लाइक एग्जैक्टली आफ्टर 7.5 मिनट ऑफ फिनिशिंग द वर्कआउट मैं अपना प्रोटीन शेक पीऊंगा बिकॉज एनाबॉलिक विंडो में से जाएगी. यो प्रो एनाबॉलिक विंडो, मी नोइंग एंड प्रीचिंग के एनाबॉलिक विंडो इज अ मिथ एंड वो क्यों है मैं बताता हूँ आगे. बाकी यार आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज डेट्स खजूर फॉर पोस्ट वर्कआउट, मैं बताता हूँ क्यों. बट लाइक आई लव दीज, मतलब ये मेरे पास स्टैक्ड होती है हमेशा घर में. जो GI रेशो होता है ना फूड्स का, तो GI रेशो इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स. इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो मीठी है वो कितनी जल्दी ब्लड शुगर रिलीज कर सकती है तुम्हारे ब्लड में. जिनका GI लेवल कम होता है मतलब वो स्लोली डाइजेस्ट उनकी शुगर तुम्हारे ब्लड में जाती है, लाइक ओटमील वगैरह हो गया सारी चीज़ें. एंड जिनका GI रेशो हाई होता है मोस्टली फ्रूट्स और शुगर और ये सारी चीज़ें, वो इसका मतलब होता है कि फॉरन से तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी और फिर मतलब मेटाबलाइज होना शुरू हो जाएगी व्हाटएवर. तो दिस थिंग हैज द हाईएस्ट GI रेशोज अमंग नेचुरल शुगर्स लाइक. तो इट मीन्स कि इट फॉरन से गोज इनटू योर वेन्स एंड ब्लड एंड रिवाइटलाइज री-एनर्जाइज एंड तुम्हारे मसल्स में वापस से ग्लाइकोजन रिस्टोर करना शुरू करता है. ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट टेस्ट रियली गुड, इट्स नेचुरल शुगर एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक चॉकलेट बट नेचुरल एंड इट्स लाइक नॉट वॉल्यूमेट्रिक. तो खा के तुम उल्टी आना शुरू हो जाएगी, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा. तो ये हो गया वे प्रोटीन शेक हो गया एंड I'll show you the magical sauce. Bhaijan, check it up. So that's that creatine. That is the creatine that I've been using for the past couple of months. Creatine yaar is the most magical thing. No replacement, for real. Like, I don't know who created this, but like a godly invention, crazy. Studies, by the way, show that rather than drinking creatine, if you snort it, your muscle growth enhances by 30%. I made that up. Source, trust me, bro. मैं इसलिए अच्छा हाँ मैं बोल रहा था कि anabolic window is a myth because there isn't such thing like कि ना तुमने अगर वर्कआउट कर लिया तो जो है अगले आधे घंटे में तुम्हारी anabolic window बंद हो जाएगी. अब तो मसल तुम्हारे रिकवरी ग्रोथ करेंगे ही नहीं और इसी में तुम्हें सारा प्रोटीन लेना है और कार्ब्स लेना है. जब तुम मसल ट्रेन करते हो हाइपरट्रोफी के लिए, जो भी तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो
व्हाट इट डज इज स्टिमुलेट्स अ मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वही मसल रिकवरी प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, मे बी 48 आवर्स तक भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। मतलब लाइक तुम्हारी एनाबॉलिक विंडो इन लिटरल मींस 36 आवर्स की होती है, तो अगले 36 आवर्स तक वो मसल एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है एंड रिकवर हो रहा होता है। ये सीन है, दैट इज द थिंग। तो तुम अपना प्रोटीन एंड जो भी कार्ब्स हैं इन द नेक्स्ट 36 आवर्स बारी बारी करके लेना है इन स्मॉल पोर्शंस एंड शिट। देयर इज नथिंग लाइक जो है वर्कआउट कर लिया आधा घंटा तुम्हारे पास, इसमें पूरा जो है तुम पूरी गाय खा जाओ, वरना जो है तुम्हारी रिकवरी वगैरह नहीं होगी। बट विद ऑल दैट बीइंग सेड, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी एंड होता है भी ऐसा कि तुम्हारे मसल्स आर मोर लाइक इन अ डिप्लीटेड फेज, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं जो भी लूँगा थोड़े से जल्दी जाएगा मसल में, थोड़ा सा जल्दी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सारे मेरे मसल बिल्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी जाएगा। एंड ये है कि अगर मैं मोस्टली कार्ब्स लूँ, फास्ट डाइजेशन कार्ब्स एज आई सेड अर्लियर, जीआई रेशो हाई है, तो मेरे एनर्जी लेवल्स जल्दी रिप्लेनिश होंगे, व्हिच इज गुड फॉर माय नेक्स्ट वर्कआउट सेशन एंड द रेस्ट ऑफ माय डे। बाकी यार जहाँ तक बात रही प्रोटीन शेक की, यार मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता तो आई जस्ट पुट वाटर इनटू इट और मैं उसको शेक कर लेता हूँ और पी लेता हूँ। समटाइम्स इट इज डिस्गस्टिंग, समटाइम्स इट्स फाइन, बट लाइक मेरे पास टाइम होता है, स्पेशली व्हेन आई एम ऑन अ कट ना, तो मैं एक बड़ी हैक चीज़ करता हूँ। इट्स माय फेवरेट थिंग ब्रो, आई विल शो इट टू यू गाइस कि क्या सीन है एंड हाउ टू मेक इट, बट डू ट्राई इट एंड इट्स लवली व्हेन इट्स डन। हे यो, व्हाट इज अप, वी आर इन द किचन, क्या बात है। गेटिंग बैक यार, टेक जग जो ग्राइंडर वाला होता है, में थोड़ा सा दूध डालो लाइक हाफ कप, और अगर इफ यू ऑन अ कट डोंट वांट कैलोरीज तो पानी डाल दो, एंड देन फिल दिस अप विद आइस क्यूब, पुट योर प्रोटीन शेक का स्कूप इनटू दिस, एंड देन ओके देयर इज अ सीक्रेट थिंग, बाय सम ज़ैंथम गम, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है बहुत सस्ते में। हैंडल इट विद केयर, क्योंकि बहुत तबाही चीज़ होती है ब्रो, अगर वो हाथ पे लग गया ना तो तुम भागते रहोगे इधर, चिप होना शुरू हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसमें ना थोड़ा सा लाइक 1 पॉइंट ऑफ ज़ैंथम गम डालना, हाथ से नहीं डालना, अगेन टीस्पून लेना और लाइक छोटा सा उसका लाइक बहुत कम, एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट लाइक इफ यू आर टेकिंग अ टीस्पून आई वुड से 1/3 ऑफ अ टीस्पून, लाइक उससे भी कम, थोड़ा सा सही है, ऑन अ सेफ साइड कम ही रखना। व्हाट ज़ैंथम गम डज इज कि वो टेक्सचर दे देगा, तो आइसक्रीम एक्चुअली आइसक्रीम वाला वो बना देगा, आइसक्रीम उसी से बनती है मोस्टली। तो इन द एंड आई विल शो यू व्हाट द एंड प्रोडक्ट इज, बट मेक श्योर गिव इट अ गुड ग्राइंड, गुड मिक्स। सो हियर इज द अमाउंट ऑफ ज़ैंथम गम दैट आई एम पुटिंग, दिस मच इज इनफ। ठीक है, यू फिल दिस अप विद आइस। डीजे खालिद याद आ गया मुझे। एनीवेज हल्का सा शेक दैट ताकि थिंग्स गो इनटू प्लेस। Also is gonna make the most obnoxious noises, deal with it. This is what you get. No ice cream looking, slush looking. Finally, my third tip is mind muscle connection. अगर आप किसी भी तरह की हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके मसल्स बड़े हों और मोर डिफाइंड हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक माइंड मसल कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। Now mind muscle connection in layman terms is just feeling the muscle working when you are doing the set. One of the common things जो हर किसी ने नोटिस की होगी is that athletes from every sport perform basic strength training. लेकिन all these athletes and power lifters don't look very big and defined. Why? This is just because of mind muscle connection. और लोगों की ट्रेनिंग का ये पार्ट नहीं होता कि वो माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करें वर्कआउट करते हुए, and they just have to go through the movements, and that's what gives them functionality. But being a bodybuilder, you don't need functionality. You need bigger muscles, and your muscles respond to training when you focus on your form and stimulate the muscle properly. जिसके लिए mind muscle connection बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You don't have to take the weights from point A to point B. You have to take the weights from point A to point B with properly stimulating your muscle. कि उस point A से point B तक ले जाने में muscle को जितना ज़्यादा damage कर सको उतना कर दो.